Japan from ancient traditions to modern innovation and is one of the most developed country in Asia. It is also paradise, most popular and a dream destination for every traveler. Basically, Japan is famous for its high-tech cities, mountains, breathtaking views, adventures, activities, spring season, local foods, temples and well-managed and world-class public transport system. So hello guys, this is Sumit and again welcome back to our channel Go Bro Travels, and in today's video we're gonna discuss each and every single detail for Japan, like when to travel, how to travel and where to travel in Japan, and इसके अलावा भी बहुत कुछ जो एज एन इंडियन ट्रेवलर आपको जापान जाने से पहले वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए. वीडियो में भी लिटिल लॉन्ग बट आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको जापान की सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए एंड आपसे कोई भी तरह की गलती ना हो. तब तक चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊं तो यू गेट नोटिफाइड अबाउट दिस. First, we will talk about the best time to visit Japan. Although Japan is all year season with lots and lots of tourists, but in my opinion, May is the perfect month for any traveler to visit Japan in terms of comfort. January and February are the coldest months जिस time कड़ाके की ठंड पड़ती है. March and April are super duper crowded due to cherry blossom, but it is also the best season to explore Japan in terms of its beauty. जून एंड जुलाई आर बेसिकली ऑफ सीजन ड्यू टू हैवी रेन. इस सीजन में इतनी बारिश गिरती है कि आप अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल पाओगे. August and September are the hottest and most humid months. October and November are also very crowded with autumn leaves. And December वैसे अच्छा season है for traveling, but it is also very cold and also everyone are busy with celebrating Christmas and New Year. May in good way doesn't have any big events, तो all over Japan ज़्यादा crowded नहीं रहता and you can travel comfortably and the weather and temperature is neither very cold nor very hot. In these 14 days of itinerary, we will firstly cover capital of Japan, Tokyo, and its nearby places like Mount Takao and Churaito, which is the best view site for Mount Fuji. Then we will head towards Kiso Valley, and at last we will cover Kyoto and also its nearby places like Nara, Osaka, and Kanazawa. So basically we will cover central Japan जहाँ most of the tourist attractions point and also first time visitors के लिए ये सबसे perfect itinerary है. So basically we will go with this itinerary in this 14 days and if आपके पास time की कमी है तो you can customize your itinerary जो कि काफी easy हो जाएगा after watching this video. Next we will discuss about the apps which are lifesavers in Japan. So number 1, Google Maps. Google Maps is the best application till now for understanding public transport in Japan. Also कैसे आप एक रूट से दूसरे रूट जा सकते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, बाय वॉक, और Google Maps पर इन सब की डिटेल्स इतनी डेप्थ में मिल जाएगी कि आपको ट्रेवलिंग में कोई भी तरह का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा. नंबर 2, Klook ऐप. विद द हेल्प ऑफ Klook ऐप आप पूरे जापान के मेजर टूरिस्ट एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शंस काफी बेटर रेट्स में रिजर्व कर सकते हैं. अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज के अलावा इस ऐप पर आप सिम कार्ड, JR पास एंड और भी काफी चीजें परचेज कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी रेट्स में. नंबर 3, जापान ट्रेवल. दिस ऐप इज द परफेक्ट ऐप इफ यू आर यूजिंग ट्रेन्स एंड बसेस इन जापान. आपको बस अपने डिपार्चर स्टेशन एंड अराइवल स्टेशन का नाम डालना है एंड लिटरली दिस ऐप विल शो डेप्थ डिटेल्स ऑफ ऑल द लोकल ट्रांसपोर्ट बिटवीन योर मेंशन्ड स्टेशंस. यहां तक कि उनके रेट्स एंड टाइमिंग्स तक भी ये ऐप बता देती है. चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स येट मोस्ट चीपेस्ट जापान वीजा की. सो बेसिकली ऑब्टेनिंग जापान वीजा इज नॉट इजी फॉर एवरीवन. हाँ, जो अच्छी सैलरी पे एम्प्लॉय है या जिनके सारे डॉक्यूमेंट सॉर्टेड एंड बैंक बैलेंस काफी अच्छा है उनके लिए जापान वीजा इज very easy. So here is the list of all the documents and formalities which are required for Japan visa. So number 1, obviously your passport with at least 6 months of validity and 2 blank pages. If नहीं है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए. Also keep in mind अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है जो कि एक्सपायर हो गया है वो भी वहां चाहिएगा because Japan embassy needs to see your travel history. Number 2, 2 Xerox copies of your passport. आपको पासपोर्ट के फ्रंट एंड बैक की 2 कॉपीज साथ में चाहिएगी. मेक श्योर पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक एक ही पेपर पर एडजस्ट करके कॉपी निकलवा ले. नंबर 3, आपको चाहिएगी 2 इंच बाय 2 इंच पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड. नंबर 4, आपको चाहिएगा रिटर्न फ्लाइट टिकट. मैं रिकमेंड करूंगा आप डमी टिकट्स बनवा ले. इन केस आपका वीजा नहीं लगता है तो फ्लाइट्स का पैसा बच जाएगा एंड ऑल्सो VFS एक्सेप्ट्स डमी टिकट. इसके अलावा आपको चाहिएगा अकोमोडेशन प्रूफ. उसको भी आप booking.com से या दूसरी कोई वेबसाइट से होटल बुक करवा ले जहां प्री पेमेंट ना देना पड़े. वो होटल बुक करवा ले जिसका पैसा आप वहां जाकर देंगे. नंबर 6, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करके देना पड़ेगा. वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से वो लिंक ओपन कर लेना, अपनी डिटेल्स यहाँ डालना स्टार्ट कर ले. फर्स्ट आप अपना सरनेम डाल दीजिए. इफ आपके पासपोर्ट में सरनेम मेंशन नहीं है तो आप ये जगह खाली छोड़ दे. यहाँ डाल दीजिए आपका नेम एंड इफ मिडिल नेम हो तो वो भी यहाँ पर डाल दीजिए. देन डाल दीजिए डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में. देन प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद सेक्स मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो, नेशनलिटी इंडियन.
आईडी नंबर इशू टू यू बाय योर गवर्नमेंट में डाल दीजिए योर आधार कार्ड नंबर। देन आपको जो पासपोर्ट टाइप है उस पर टिक कर लीजिए। देन योर पासपोर्ट नंबर, देन प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू। इशूइंग अथॉरिटी में डाल दीजिए आरपीओ इंडिया। आरपीओ का फुल फॉर्म है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, जिन्होंने आपका पासपोर्ट इशू किया था। देन डाल दीजिए पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। पर्पस ऑफ विजिट ऑफ जापान में डाल दीजिए टूरिज्म। जापान में जितने दिन स्टे करना चाहते हो वो यहाँ लिख लो। यहाँ डाल दीजिए आपके डेट ऑफ अराइवल इन जापान, जिस डेट को आपकी फ्लाइट जापान में लैंड करेगी। एंड यहाँ मेंशन कर ले उस एयरपोर्ट का नाम जहाँ आप जापान में लैंड करोगे। यहाँ आपकी एयरलाइन कंपनी का नाम एंड यहाँ आपके फर्स्ट होटल की बुकिंग नेम डाल दीजिए एंड उनकी डिटेल्स। आपको ये सब होटल्स बुक करवाते टाइम मिल जाएगी। पहले जापान ट्रैवल कर रखे हो तो उसकी डिटेल्स वरना ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ आपका रेजिडेंशियल एड्रेस डाल दीजिए। देन यहाँ आपका प्रोफेशन लिख लीजिए एंड इफ किसी की कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर की डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। देन आपके स्पाउस का प्रोफेशन क्या है वो बता दीजिए। इफ जापान में किसी को जानते हो तो उनकी डिटेल्स वरना ये सब ब्लैंक छोड़ दो। इसके बाद सब पर नो क्लिक कर लीजिए। देन आज की डेट डाल के प्रिंट निकलवा ले। प्रिंट निकालने के बाद आप यहाँ चिपका ले आपकी पासपोर्ट साइज फोटो एंड फॉर्म के सबसे नीचे ब्लू पेन से साइन कर ले। तो ये था वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा आपको चाहिएगा लास्ट 6 मंथ ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड कीप इन माइंड दैट स्टेटमेंट शुड बी स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय योर बैंक, तभी वो वहां वैलिड रहेगा। अब सवाल यह है कि कितना बैलेंस होना चाहिए और बैंक अकाउंट। तो बेसिकली मैंने 1 लाख रुपीस बैंक बैलेंस वालों के भी जापान वीजा लगते हुए देखे हैं, 5 लाख वालों के वीजा रिजेक्ट होते हुए भी वहां पर देखे हैं। इट जस्ट डिपेंड ऑन दैट हाउ योर डॉक्यूमेंट्स आर कन्विंसिंग जापान एम्बेसी। स्टिल आप मिनिमम लास्ट 6 मंथ में आपका बैलेंस 2 लाख से ऊपर रखें और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डाल के छोड़ दिया। दैट शुड बी योर रनिंग अकाउंट। आपके उस अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं, ऑल्सो आप इसी अकाउंट से स्पेंड भी कर रहे हैं। एंड इफ आपका ट्रांजैक्शन एंड अच्छा बैलेंस करंट अकाउंट में है तो आप वो भी वहां पर शो कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट काइंडली सबमिट सम काइंड ऑफ प्रूफ दैट वो अकाउंट आप ही का है एंड योर नेम शुड बी रिटन ओवर देयर। Like you can attach your GST certificate or any kind of company registration certificate. And if आपको डाउट है कि आपके बैंक बैलेंस के कारण आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है तो you should definitely add your investment certificates with bank statement like FD or any kind of bonds, mutual funds, and if you have any kind of other investment you can add it over there. Japan Embassy just need to clarify that you are financially stable and if you can survive in one of the richest country of Asia. And the person who is working in any company or he is employed, then उस केस में उनके बैंक स्टेटमेंट के साथ में लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप भी वहां पर अटैच होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयज को अपने कंपनी से लीव लेटर या एनओसी भी लेनी पड़ेगी ताकि वो भी वहां इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच हो सके। देन आपको चाहिएगा लास्ट 2 इयर्स का ITR, बट आई विल रिकमेंड आप लास्ट 3 इयर्स का ITR अटैच करें फॉर बेटर इंप्रेशन। ऑल्सो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप परचेज कर ले, काफी सस्ता भी आता है एंड काफी रिकमेंडेबल भी। आप वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ में अटैच करें ताकि एम्बेसी कैन फील यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर ट्रिप। उसके बाद में अपनी डे वाइज आइटनरी बनाया, लाइक ऑन डे 1 आई विल ट्रेवल दीज प्लेसेस इन टोक्यो, ऑन डे 2 आई विल कवर दीज प्लेसेस, ऑन डे 5 आई विल ट्रेवल किसो वैली फ्रॉम टोक्यो। एंड जो भी आपका सारा प्लान है उसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ में आपका एक ट्रेवल प्लान बना ले एंड उसका प्रिंट आउट निकलवा ले। एंड एट लास्ट आपको चाहिए एक कवर लेटर जिसमें आप सब कुछ मेंशन कर ले। एंड बेसिकली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर विच विल टेल योर फॉर्च्यून दैट आपका वीजा लगेगा या नहीं। मैं स्क्रीन पर अपना कवर लेटर शेयर कर देता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर ले। तो लेटर जाएगा वीजा ऑफिसर, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान, दिल्ली, इंडिया। इफ आप मुंबई के एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हो तो मुंबई, इंडिया। सब्जेक्ट में डाल दीजिए एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीजा। देन अपनी डिटेल्स डाल दे, माई सेल्फ, जो भी आपका नाम, होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर या आपका पासपोर्ट नंबर एंड आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। देन बताइए आप जापान किस पर्पज से जा रहे हैं, लाइक टूरिज्म पर्पस और एनी काइंड ऑफ पर्पस। उसके बाद अपने प्रोफेशन के बारे में डाल दीजिए दैट यू आर प्रोपराइटर ऑफ एनी फर्म और आपका इस तरह का बिजनेस है। एंड ड्यू टू टाइट शेड्यूल एंड वर्कलोड मैं ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर पाता, बट स्टिल मैंने लास्ट 5 ईयर्स में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड हांगकांग ट्रेवल किया है और मैंने मेरे फ्रेंड से जो जापान ट्रेवल करके आ रखा है उसे जापान के बारे में काफी सुनना है, तब से ट्रेवलिंग जापान वॉज इन माई प्रायोरिटी लिस्ट। इसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो सब यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद लिख लीजिए आपके ट्रैवलिंग डेट्स एंड ये सब लिख दीजिए कि आप अपने ट्रिप का एक्सपेंस खुद उठाएंगे एंड सारी ट्रिप की प्लानिंग आपने खुद से ही करी। देन आपका नेम एंड नंबर, दैट्स इट। तो ये था आपका कवर लेटर और ये जो सारे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए आप उनका एक बंच बना ले एंड अपने पास में रख ले। देन सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने के बाद आपको VFS के वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर बना के उन्हें अपॉइंटमेंट टाइम पर दे दीजिए। दे माइट इवन आस्क यू सम क्वेश्चंस और इंटरव्यू यू एंड देन उनके सेटिस्फाइड होने के बाद आपको मिल जाएगा जापान का वीजा। जापान वीजा की फीस 500 रुपीज होती है जो कि रिफंडेबल होती है एंड इसके अलावा VFS की सर्विसेज होती है 650 रुपीज जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसके अलावा 550 रुपीज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कोरियर के थ्रू वापस मंगवाने हैं तो ऑल टोटल आपका वीजा कॉस्ट 1700 रुपीज तक पड़ जाएगा। नाउ आपका वीजा वाला पॉइंट भी सॉर्ट हो गया है। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स इज ओपन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं एंड आई विल कम विद द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लाइट्स फॉर जापान फ्रॉम इंडिया।
तो बेसिकली इफ यू आर ट्रैवलिंग जापान एंड यू आर टाइट इन बजट, देन आपको डेफिनेटली VSJet एयर की फ्लाइट बुक करवानी चाहिए। इंडिया के हर मेजर एयरपोर्ट से आपको VSJet एयर की फ्लाइट्स मिल जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 14,000 रुपीज फॉर वन वे। एंड VSJet की फ्लाइट है तो ऑब्वियसली इस फ्लाइट का लेओवर होगा वियतनाम में। द बिगेस्ट पेन इज लेओवर टाइम, ये अराउंड 10 से 12 आवर्स का लेओवर टाइम पीरियड होता है। बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, देन यू शुड डेफिनेटली बुक दिस फ्लाइट, बिकॉज ऑन अदर हैंड अदर फ्लाइट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 25 to 30,000, which is very expensive. Now we should discuss about the accommodation in Japan. तो basically Japan is one of the most expensive country worldwide, तो obviously आपका accommodation सस्ता नहीं होने वाला। I will suggest कि if आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और इधर you want to enjoy hostel life, तो आप for sure hostel बुक करवा ले। हॉस्टल में डॉर्म्स की प्राइस 2,500 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक वेबसाइट है hostelworld.com, वहां से इजीली बुक करवा सकते हैं। ऑल्सो मेरा सेकंड सजेशन ये रहेगा दैट इफ यू आर प्रेफरिंग होटल ओवर हॉस्टल, तो आप 100% एयरबीएनबी की तरफ जाए, होटल रूम्स पे दिमाग ना लगाए। एयरबीएनबी इज बेसिकली लोकल पीपल रेंटिंग आउट देयर रूम्स, होम्स और फ्लैट्स, जहां आपको एक होटल रूम के कंपेयर में काफी अच्छी अम्यूनिटीज मिल जाती है। ऑल्सो इफ आप जापान ट्रैवल कर रहे हो एंड यू आर वेजिटेरियन, तो मे भी आपको खाने पीने में काफी इश्यूज आ सकते हैं। तो एयरबीएनबी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक सेपरेट किचन मिल जाती है, जहां आप थोड़ा बहुत खुद का कुक कर सकते हो एंड अपना खाने पीने कुछ पार्ट आप इजीली सॉर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली एयरबीएनबी इज मस्ट रिकमेंडेबल इन कंट्री लाइक जापान। यहाँ आपको एवरेज 5,000 पर नाइट में 2 जनों का स्टे आराम से मिल जाएगा, तो पर पर्सन कॉस्ट आप 2,500 रुपीज तक आराम से मैनेज कर सकते हैं। एंड इफ बात करें फूड ऑप्शंस की, तो ट्रस्ट मी जापान इज पैराडाइज फॉर फूड लवर्स एंड इट इज आल्सो फेमस फॉर इट्स यूनिक फूड। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन इन जापान, आपको थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी के नॉन वेज फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे, विच विल बी द बेस्ट पार्ट फॉर यू ऑफ दिस ट्रिप। एंड इफ बात करें वेजिटेरियन फूड्स की, तो उसमें भी आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू सर्च वेगन फूड्स और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स इन गूगल मैप एंड बूम, यू गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन एवरी लोकेलिटी। Next, we will talk about how to travel across Japan. So, Japan government is very serious about the transportation system over there, and this is the only reason Japan's public transport is said to be the best transportation system all over the world. वहाँ आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए कैब्स मिल जाएगी, but this will be the most expensive mode of traveling over there. Then there are buses which are very affordable when you are traveling inside city. Otherwise, the best and most affordable and cheapest mode of traveling all over Japan is riding trains. Japan's rail network is said to be the most powerful network all over world, which cover almost every area in every city of Japan. So when you are searching for your hotels or Airbnbs, make sure वो मेट्रो स्टेशन या ट्रेन स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हो, ताकि आपका कोई भी तरह का टाइम वेस्ट ना हो। ऑल्सो ट्रेन ट्रेवलिंग को और इजी बना देता है JR पास, विच इज लव्ड बाय मेनी टूरिस्ट। JR पास इज एक्चुअली अनलिमिटेड ट्रेवलिंग पास इन ऑल ओवर जापान। बेसिकली जापान रेलवेज में डिफरेंट तरह के लाइन्स या ट्रैक्स बन रखे हैं, जिसमें JR लाइन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन विच कवर्स ऑलमोस्ट एवरी मेन अट्रैक्शन सिटीज एंड पॉइंट्स ऑल ओवर जापान। JR ट्रेन के साथ साथ आपको JR बस एंड JR फेरीज मिल जाती है, विच यू कैन यूज एब्सोल्युटली फ्री व्हेन यू हैव दिस JR पास। यू कैन परचेज दिस पास फ्रॉम एयरपोर्ट इटसेल्फ, और यू कैन परचेज इट ऑनलाइन वाया क्लूक ऐप, जहां आपको एक डिजिटल वाउचर मिल जाता है एंड देन यू कैन टेक JR पास फ्रॉम एयरपोर्ट बाय शोइंग दिस वाउचर, विच इज वेरी हैसल फ्री, बिना कोई लाइन में लगे हुए या बिना कोई भी तरह की फॉर्मेलिटीज करते हुए। एंड ऑल्सो एयरपोर्ट के कंपेयर में JR पास क्लूक ऐप पर आपको 3 से 4,000 रुपीज तक सस्ता भी पड़ जाता है। अगर 14 डेज अनलिमिटेड JR पास की बात करें, तो ये आपको तकरीबन 45,000 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से क्लूक ऐप पर मिल जाएगा, विच इज टोटली वर्थ एज कंपेयर्ड इफ आप ट्रेन के अलग अलग टिकट परचेस कर रहे हो तो। एंड बाकी का आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा दैट हाउ टू यूज ट्रेन्स एंड हाउ यू विल सेव मनी बाय परचेजिंग JR पास। तो आई होप यहां तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स, देन कमेंट बॉक्स इज ओपन, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, आई विल कम विद द आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। तो चलो अब पकड़ लेते हैं जापान की फ्लाइट एंड पहुंच जाते हैं जापान, जहां आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा इमिग्रेशन में दे कैन आस्क यू फॉर योर वीजा, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, होटल अकोमोडेशन प्रूफ एंड सम करेंसी समवेयर अराउंड $5,000 पर पर्सन। इसके अलावा यू हैव टू फिल अनदर डिक्लेरेशन फॉर्म, जो आपसे कुछ डिटेल्स पूछते हैं। यू जस्ट फिल इट एंड इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखा दीजिए। डिक्लेरेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्लाइट के अंदर ही मिल जाएगा, अदरवाइज एयरपोर्ट पर मिल जाता है। दैट्स इट, ये सारी चीजें दिखाओ एंड यू आर गुड टू गो। And if you are looking for currency, then literally Japan airport has currency exchange vending machines which provides you Japan currency yen with best rates. I would recommend you to bring combination of forex cards and some US dollars, because US dollars change करवाना जापान में ही नहीं, दुनिया की हर कंट्री में is very easy and also you get best exchange rate as compared to any other currency. एंड अगर बात करें सिम कार्ड की, तो वैसे जापान में आपको हर जगह 7-Eleven स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी 7-Eleven स्टोर में जाकर सिम कार्ड परचेज कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड इफ आपके फोन ई सिम के लिए कंपेटेबल है, देन यू शुड परचेज ई सिम फ्रॉम क्लूक ऐप, जिसका वो 15 डेज जहां पर आपको 500 MB पर डे डाटा मिल जाता है, जो कि ऑन एंड अराउंड को 1,200 रुपीज तक सिम कार्ड मिल जाएगी। आप वो परचेज कर सकते हैं।
So now we will discuss about the most awaited topic, 14 days detailed itinerary for Japan, and for that I am assuming that you are landing at Haneda Airport which is around 25 kilometers away from city center of Tokyo. आप एयरपोर्ट पर JR काउंटर जाकर JR पास को एक्टिवेट करवा दीजिए. यू जस्ट हैव टू शो योर डिजिटल वाउचर एट JR काउंटर एंड जो डिजिटल वाउचर है वो आपको क्लू कैप पर मिल जाएगा. वो आपको JR काउंटर पर दिखाना है एंड दे विल स्कैन दैट वाउचर एंड आपको आपका फिजिकल एक्टिवेटेड JR कार्ड मिल जाएगा. एयरपोर्ट से फ्री होके चले जाइए आपकी होटल और Airbnb एंड ले लीजिए चेक इन. एंड इफ टॉकिंग अबाउट स्टेज इन टोक्यो दैट यू कैन प्रीफर शिंजुकू एरिया विच इज परफेक्ट प्लेस टू लिव एज अ टूरिस्ट. सो बेसिकली डे फर्स्ट का फर्स्ट हाफ आपको एयरपोर्ट, होटल चेक इन और टोक्यो को थोड़ा बहुत समझने में निकल जाएगा. सो यू कैन बिगिन योर सेकंड हाफ ऑफ द डे बाय विजिटिंग टोक्यो मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग फॉर फ्री स्काई ऑब्जर्वेशन डेक, जहां पूरे टोक्यो को 360 डिग्री व्यू से एंजॉय कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी सिंगल पेनी. देन इन सनसेट टाइम यू कैन हेड टुवर्ड्स योर होटल एरिया शिंजुकू विच इज कंप्लीटली अमेजिंग टू वॉच इन सनसेट और इन नाइट टाइम बिकॉज एट दैट टाइम वहां आपको हर जगह नियॉन लाइट्स एंड सो मेनी पीपल स्ट्रॉल करते हुए दिख जाएंगे. शिंजुकू एरिया में फर्स्ट आप चले जाइए काबुकिचो स्ट्रीट विच इज ऑल्सो नोन एज एडल्ट एंटरटेनमेंट district. You can hop into some hosting bars, clubs, pubs, or also you can shop for some adult toys over there. Surprisingly, this street is very safe to walk even if you are a solo traveler. Then you can explore narrow streets of Omoi Nishiguchi which is the perfect place for local foods. Also ये आपको हर जगह lanterns देखने को मिल जाएगी which is somehow too photogenic and beautiful to watch. And if you are vegetarian then you can search vegetarian restaurants in Google Maps and you will get so many options in this street. Then end your night by doing pub hoppings in the back street of Golden Guy. There are so many fancy and aesthetic type bars and pubs which you're gonna surely enjoy over there. And then you can head towards your hotel. Begin your second day early by heading towards neighborhood of Asakusa. Asakusa is basically old and traditional area of Tokyo where you will get to see traditional spots with modern touch. Firstly, head towards the Sensoji Shrine which is the biggest and oldest shrine of Tokyo. This shrine is almost crowded with locals as well as tourists. See some of the amazing architecture over this shrine which is completely amazing to watch. After that, just across there is a street named Nakamichi Dori जो कि small food vendors से भरपूर है. Just try some of the local Japanese eateries while roaming in the crowd of this street. You will find local pancakes, sweets, handmade biscuits and many more over the street. Stop on some stalls and just have a try. आसपास में और भी काफी streets है. You can explore it if you have more time. Then in evening you can head towards the electronic hub of Akihabara. जैसे जैसे अंधेरा पड़ता है वैसे वैसे this place comes to life. No surprise why this place is called electronic hub where you will find some of the most amazing electric signboards and LEDs all over this place. Also you can shop for some second hand electronic items which you can get in best rates. After that you can go to your place for a good sleep. Start your third day by visiting Yoyogi Park which is the perfect hangout place for local Japanese people. It's a perfect place to relax in the city like Tokyo which is completely filled with complete greenery and mini lake over there. आपको वहाँ काफी लोकल जापानीज चिल करते हुए दिख जाएंगे एंड लोकल्स के साथ साथ आपको वहाँ काफी टूरिस्ट भी नजर आ जाएंगे. Then in the evening you can head towards the neighborhood of Shibuya and the most interesting thing to do or to see in Shibuya is Shibuya Crossing. It is also said to be the most busiest crossing all over the world and also no Tokyo trip is complete if you haven't watched or walked on this crossing. Crossing के अलावा Shibuya area is fully entertainment area where you can hop into some pubs, clubs, anime shopping stores and many more fun things to do over there. Then you can head towards your hotel to end your day. On day 4th, get out of Tokyo city for some time. Although you can spend some more weeks or even months in metropolis city like Tokyo, but getting out of the city is like completely different flavor of Japan. You can head towards Tokyo's favorite picnic destination, Mount Takao. You can hike up to Mountain Takao which has different paths to choose depend on distance and time. You can hike till top or you can go by open chair car depends on your fitness level. Hiking this mountain is amazing experience in its own way. You will get to see lots of shrines, temples, food stalls and many more things which somehow shows the Japanese culture. ये हमेशा ही locals as well as tourists से भरा रहता है. Hiking this mountain can take a full complete day so we will not make further plans. We will directly go to the hotel afterwards. Japan trip is incomplete if you haven't witnessed world famous Mount Fuji. So on day 5th we're gonna explore breathtaking views of Mount Fuji. In my opinion, the best view site for this mount is Churaito Pagoda. This pagoda is of 5 stories and behind this you will witness epic views of Mount Fuji. It is always crowded with locals as well as tourists, so going early morning is very recommendable where there is lesser crowd as compared if you are going in late morning or in noon time. You have to hike around 15 minutes to reach this pagoda, but trust me, this is a perfect view site and the most photogenic hotspot for Mount Fuji. Afterwards, you can head toward Lake Kawaguchi-go, which is even more better viewpoint of Mountain Fuji. Also, you can relax and chill over this lake while hunting some local Japanese food and Japanese culture. Then in evening or in night time, you can go back to your hotel and end your tiring day. Start your day 6 by checking out of the hotel and say goodbye to Tokyo.
Catch Shinkansen train or bullet train for Nagoya. Riding Shinkansen is amazing experience in itself, so make sure to enjoy this ride along with views outside on this way. Then from Nagoya, take a train to Nakatsugawa, then take a short bus ride for coastal town Magome. Magome is basically in Kiso Valley, and this valley takes you with some very scenic mountain trails. Scroll around Kiso Valley where you will get to see old traditional Japanese culture with old Japanese constructions and houses. Your first half will be covered in traveling, and on other half you can stroll around Kiso Valley where you will think that you have traveled the time and gone into past. You can explore Magome town by walking where you will never get bored of it. End your hustle bustle day while resting in some old style guest house, and on day 7 start hiking Nakasendo trail, which is 7 kilometers long and will take you around 4 to 5 hours to reach historical town of Kiso Valley, Sumago. Between this route you will see some epic and amazing views where you can stop and can take some amazing photographs. This trail takes you into the forest path where you will get to see waterfalls, old time stone carvings alongside river, which will be amazing hike you have ever done. Stop by some tea houses or mini restaurants where you can enjoy local eateries and tea while hiking. Then you can explore postal town of Sumago by walking and can relax some time over there. You can check out couple of shrines over there and can have your lunch in some old style cafes. After exploring, you can take a short bus ride from Sumago and head back to Magome. Then check out from hotel and take a train ride for Kyoto. You have to reach Nakatsugawa from Magome by bus, then you will have connecting trains from Nakatsugawa to Nagoya and then Nagoya to Kyoto, where your second half day will be end in traveling only. Take a hotel or Airbnb near Kyoto station and end your tiring day over there. Early morning of day 8, head towards Kiyomizu-Michi by bus from Kyoto station and then walk towards Kiyomizu-Dera temple, which is the most famous temple of Kyoto and also the perfect viewpoint for Kyoto. Pray over there and feel the peace within temple. ये temple भी काफी tourist as well as locals से हमेशा ही भरा रहता है, तो I would recommend you to reach here in early morning to avoid the crowd. Also, there are few viewing decks जहाँ से you can enjoy amazing views of Kyoto city and can click some Instagrammable images. There are some local vegetarian restaurants nearby where you can enjoy local foods like tofu, which is very famous over there. Evening time you can head towards Gion district and feel the old Kyoto vibes over there. You can walk around some cool streets over there and can enjoy Kyoto's decent nightlife. Also, you can head to couple of shrines like Tatsumi Jinja and the Yasaka shrine, which are on walking distance. Also, you can take a walk on Hanami Koji street where you can find some girls wearing old Japanese costume and you can have some photos clicked with them. Then in night you can head back to your hotel. On day 9th, head towards the famous shrine all over Japan, Fushimi Inari Shrine. This shrine have approx 10,000 orange torii gates which look so amazing in reality. Behind the uncountable torii gates, there are also some small gates decorated over there where some are dedicated to frogs, some are dedicated to dogs. At the bottom of the shrine, there is a temple where you will see lots of crowd, so to avoid the crowd, head in over there in early morning. You have to do some hike to reach at the end of the shrine, and after that you will see amazing view of Kyoto city. After exploring the shrine, you can head towards Nishiki market for food, which is also known as Kyoto's kitchen. In this market, you will see thousands of food vendors selling local foods over there. This market can be paradise for seafood lovers where you will get amazing varieties of seafood. Also, there are many options available for vegetarians which you can easily hunt them when you are in this market. Then in sunset time, you can take a walk around near the Kamo river, which is the famous hangout spot for Kyoto people. Then for dinner, you can head towards Pontocho, which is at walking distance. Here you will get to see lots of restaurants where you can hop in for perfect dinner. Afterwards, you can head to your hotel for some sleep. Start your 10th day super early and head towards one of the cutest, prettiest and photogenic pathway all around Japan, Philosopher's Path. The Philosopher's Walk is a pedestrian path that follows a cherry tree on both sides lying near canal. This will be the most amazing and super experience walk you will ever witness. It is on around 30 minutes of walk if you go without stopping anywhere. But I recommend you to stop over shrines and temples between this pathway. At the end of this path, you will see the most beautiful Buddhist temple, the Nanzenji temple, which is obviously worth to visit. Offer your prayings over there and feel the peaceful vibes, which will be the perfect start of your day. Behind this temple, there are some amazing views of lush green mountains, which you can hike over it for another most famous shrine. After coming back to the temple, you can stroll inside the streets of Kyoto. Then in evening or in night, you can go back to your hotel. Start your 11th day with exploring Nara. Nara is a bit far from Kyoto, but thanks to Japan Fast Train, you can reach over there within an hour. After reaching Nara station, head towards Kasuga Taisha Shrine. Walk towards Orange Corridor where there are hundreds of lanterns in a line which looks way beautiful in real time. At the entrance of the shrine, you can see 1,000-year-old giant tree where you can click some photos or can relax under this tree. You can explore this shrine by walk, which has many corridors and it is absolutely worth to watch. After that, you can go towards Todaiji, which is the biggest Buddhist temple of Nara. Offer your prayers over there and just relax and see the Japanese culture over there. There are so many big Buddha statues lined in this temple which looks very amazing.
amazing. After exploring this temple, you can head towards Nakatane-dou for local Japanese eateries, where you can also find some delicious vegetarian restaurants where you can have your dinner. Then again catch a train and go to Kyoto and rest in your room. On day 12, take a late morning Shinkansen train for Osaka and head towards the funky downtown area Shinsekai, which is the most famous tourist hub in Osaka. Stroll over the streets of Shinsekai, where you can shop for souvenirs or any kind of gifts for your friends and families. After shopping and strolling over the streets, you can head towards Hozenji Temple, which looks absolutely amazing in evening time, where everywhere is dark and this temple lightens up with lanterns. Behind this temple, there are many famous streets where you can hop into some pubs, bars or cute little cafes where you can enjoy decent nightlife of Osaka. For more better nightlife, you can head towards Dotonbori, which comes to life after sun sets. You can enjoy boating over there, and also you can see all the travelers and tourists exploring the streets of Dotonbori. Then you can catch your train and come back to Kyoto. On day 13, take a 2.5-hour train from Kyoto to Kanazawa, although you can check out from Kyoto from here and can book your day stay in Kanazawa itself. Kanazawa is basically quieter city with lesser tourists as compared to any other tourist hotspot in Japan. But trust me, this city has all from complete Japanese architect to beautiful local Japanese culture. At first, you can head towards Kenroku-en Gardens to witness the amazing landscape of Kanazawa. Walk through whole garden where there are many places to be explored. Even you can have a cup of matcha tea while watching amazing views of beautiful lake inside this garden. Even you are visiting Japan in spring, in winter or even in summer, you can expect breathtaking views in this garden in all 365 days of year. Nearby this garden, you can head towards Kazuemachi, where you can stroll around beautiful bridge, where you can see very Kanzawa-like and Japanese-like scenes and atmosphere. It is amazing experience to stroll around this area in evening time. Also, you can explore Higashichaya, which is traditional tea house district of Kanazawa. In Higashichaya, you will absolutely see girls wearing local Japanese dresses, which are also known as geisha over there. Also, this place is perfect for dining, and also this place has Indian restaurants in this area. Then take a late night train from Kanazawa and reach Tokyo from here. Then on day 14, catch a flight from Tokyo and reach India, where your 14 days trip will get to end. So this was complete 14 days itinerary for Japan. I hope ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी. I was there for exact 14 days and I followed this itinerary only, and trust me, this itinerary is perfect for first time visitors. Also, if we talk about JR Pass, then total cost of riding trains in Japan, if you may not purchase JR Pass, will be around 53,127 yen, which is around 95,000 rupees. But if you are purchasing this pass, then you will get it in 45,000 rupees. So basically, you are saving around 50k with the help of this pass. So I would highly recommend you to purchase this pass if you're gonna follow this itinerary. Also, consider these tips if you are traveling Japan. Number 1, carry that kind of shoes which are comfortable for your feet. Walking in Japan is most used mode of transport. Number 2, carry umbrella because Japan weather is unpredictable, rains can come anytime. Number 3, learn to use chopsticks because forks and spoons are not available everywhere. Number 4, never leave a tip in restaurants because Japanese people feel it very rude. Number 5, don't light up your cigarettes everywhere. Japanese people don't like smoking. Number 6, for any help you can ask Japanese people. They are very polite. They will help you with every possible way. So that is it from my side for Japan. मैंने सारी फेमस अट्रैक्शंस इस वीडियो में कवर कर ली है, तो आपके लिए जापान प्लान करना काफी इजी हो जाएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, एंड कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी लेके आएंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, और हम जल्दी मिलेंगे अपने नए कंट्री के ट्रेवल आइटनरी के साथ. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाए. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.